So now we're going into our pharmacy now. This is where all our medications are kept, and we'll meet our pharmacist as well. Okay, so our pharmacist has gone missing at the moment. So if we can just show the medication here. So we've got a lot of antibiotics here, augmentin, erythromycin, which we all need for common infections. We've got flucloxacillin, which we use for abscesses, and then we've got metronidazole and things, especially for patients with diarrhea. We've got painkillers here, treatments for malaria, again anti-allergy things. So this every evening after the clinic, what normally happens is there's a stock take to see what kind of things are coming out and what we need. So every morning it's all topped up, so we have all the required drugs for the day. Again, we've got stocks here, Diarrolite sachets, which are vital for dehydrated patients with diarrhea. Got eye drops for infections. And here's our dispenser here. आप थोड़ा सा कुछ बात कर सकते हो जी किस चीज़ के बारे में? तो आप कौन सी दवाएं आप रखते हैं यहाँ, और कैसे आपका स्टॉक टेकिंग होता है? यहाँ हमारे पास हर किस्म के एंटीबायोटिक और पेन किलर टेबलेट होते हैं, फेमिकोडिन होता है, मैदे के लिए हर किस्म के क्रीम है, जो स्केबिस केसेस हैं, एंटी मलेरिया केसेस हैं, सारों की मेडिसिन हमारे पास होते हैं। ये हम रूटीन से हेड ऑफिस पे लाते हैं और जिसको यहाँ एंट्री करते हैं। जो डॉक्टर यहाँ मेडिसिन देते हैं वो परचेज वाइज जो सीरियल होता है वो हम यहाँ एंट्री करते हैं। बाद में जो हमारे पास जो मेडिसिन ख़त्म हो जाते हैं हम दोबारा ऑर्डर देते हैं, दोबारा बेचते हैं। सारा रिकॉर्ड हमारे इसके पास रहता है। तकरीबन डेली हम 150, 120, 130, 160 ये पेशेंट हम डेली देखते हैं। तो ये आप बताइए, ये सब मेडिकेशन फ्री है? ये सारे मेडिसिन हम सबको फ्री देते हैं। जो मतलब IDPs है या इस गांव के जो गरीब लोग हैं, सारों को हम ये मेडिसिन फ्री देते हैं। कोई इसका चार्जेस नहीं होता, चाहे मतलब जितना उसको चाहिए हम बराबर डोज देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ यूरिन टेस्ट भी करते हैं। सारा मतलब ये फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं आपका फाइलिंग और आपका स्टॉक टेकिंग? हाँ बिल्कुल, ये आप देख भी सकते हैं। हम यहाँ रूटीन के साथ डेट वाइज जो मेडिसिन होता है, टॉनिक अलहदा लिखते हैं, एंटीबायोटिक अलहदा लिखते हैं, क्रीम अलहदा लिखते हैं, उसका सारा डिटेल हमारे पास यहाँ होता है। इसके अलावा हम जो पर्ची डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं वो एक पर्ची मरीज़ को देते हैं। ओरिजिनल पर्ची हम अपने पास रखते हैं, वो फिर हम उधर ले जाते हैं, अपने साथ काउंट करते हैं कंप्यूटर में। सारा रिकॉर्ड हमारे पास जमा होता है। जितना रूटीन से चलता है उसी तरह हम, और वीकली जो हम जितने मेडिसिन यहाँ से प्रोवाइड करते हैं मरीजों को, हम वीकली उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सब हेड ऑफिस पे जाता है और डॉक्यूमेंटेड होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सारा इसका एंट्री करता है। हम वो देखते हैं कि हम कितने मरीज देखते हैं, कितने मरीजों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास कितना स्टॉक है। ये सारा रिकॉर्ड जो है ना हम सब कुछ रखते हैं। इसके अलावा जो मरीज को इंजेक्शन की ज़रूरत हो, इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, हम सब वो लगाते हैं। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलें। हाँ, इसको ऑफ कर दें। हाँ, इधर ये ऑफ